अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। सोन अजुक टॉपिक मूवमेंट ऑफ फिश। Make a paper boat, put it in water and push it with one narrow end pointing forward. Did it got into water easily? Now hold the boat sideways and push it into the water from the boat broad side. Are you able to make the boat move in the water when you push it from this side? दपा अगर तुम कित पे बोट अख बनो वाटरस मज कर फ्लोट इस पॉइंट एंड अम साइड कर फ्लोट मगर अगर यम साइड निमो नैरो एंड के साइड तम साइड गि फ्लोट कह खल अंद के साइड. Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? This shape boat नाय हज यह सिद्ध गाड़ हज shape इत पे गाड़ shape. The head and tail of the fish are smaller. Head यह कल वो तो यत कल तो tail यम्स गाड़ हज यह लकट मजबाग middle portion खुल. The body tapers at both ends. Body taper गसान दोनों साइडो arrow side. This body shape is called streamline. Yet shape वन streamline shape. The shape is यथ मज ज end आसन Zivil Mazbaga is moot end. Achuna streamline. The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. You see shape you allow kara fish guide abas mas paknas. The skeleton of fish is covered with strong muscle. You skeleton fish guide that has a strong muscles pet. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and tail part swings towards the opposite side. Yeah, directions body yokun gasa, tail part yokun gasa. अम सम्स जर्क हिज लगा धक हूँ लगा यह टेल ट्विस्ट कर टेल हिलान द फिश फॉर्म्स ए करो अम करो बना देन क्विकली द बॉडी एंड टेल करो टू द अदर साइड दिस मेक्स द जर्क ये जर्क हिज लगा एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड यह वो ये मूवमेंट पे योर गम जर्क यम जर्क सत गाड़ हेका ब्रोट पकित. A series of just such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of tail. Yet fins आसान human वन fins उमो सत मदद लगा. Fish also have other fins on their body. Fish बाकी fins body पे balance body करनस मज जरूरत लगा.